So we're doing the first worksheet on the topic vertical motion, first worksheet of mechanics, which is on the topic vertical motion. Here's the first question. Okay, before we proceed, I just want to quickly recap what formulas we've discussed so far. We've discussed the most important formula, forward force minus backward force equals MA, this formula, where forward force is the force in direction of the motion, backward force is the force against the direction of motion, and equals MA. In some of the questions, acceleration is 0, so this side becomes 0, and the formula just becomes forward force equals to backward force. Okay, apart from this, we did the formulas of equation of motion, which were quite a few. Example, V is equals to U plus AT. In fact, let's just list down all of them. V square equals U square plus 2AS. And S is equals to UT plus half AT square. S is equals to VT minus half AT square. And S is equals to half U plus V times T. We also saw in the formula sheet that this is given, this is given, this is given, this is not given, and this one is given. These are the only formulas given in the mechanics part of the formula sheet. No other formula is given. Even forward minus backward is equals to MA isn't given. Okay, let's start the question, which is S1 and S2 are light inextensible strings, right? If they're talking about strings, that means we will most likely be using tension as a force, because tension is a force inside a stretched string. Okay. A and B are particles, each of mass 0.2 kgs. Okay. So this is the mass 0.2, which means weight, which is equals to mg, would be equals to 0.2 into 10. 10 is the gravitational acceleration, which would make this 2 newtons. So weight of both of these would be 2 newtons. Particle A is subtended from a fixed point O by the string S1. And particle B is suspended from A by the string S2. The particles hang in equilibrium as shown in the diagram. Equilibrium means that all the forces are balanced. That means this system is not moving at all. It's in equilibrium. So if it's in equilibrium, that means that acceleration is 0. So if we're using forward minus backward is equals to MA, forward force minus backward force is equals to MA, we would make acceleration 0. Okay. Find the tension in S1 and S2. Okay, let's first look at S1, the string, this string. Okay. Now, this string is actually carrying two weights, the weight A and also the weight B. So for string S1, here's S1, and you're going to say that it's actually carrying two weights. Okay. So the downward force is going to be 2 newtons plus 2 newtons. That is 4 newtons. You guys agree that S1 is carrying two weights, not just one?
Okay, I hope you do. Okay. And that's the downward force. The upward force would be the force of tension inside the string, which is what we have to find. So we're going to use the formula forward force equals backward force since acceleration is 0. So forward force minus backward force equals ma. This is 0. So then we have forward force equals backward force. You can call any of these forces forward, any of this force backwards because it's not moving. So I'm going to say T equals 4N. This is the value of tension in string S1. Any questions here? You have to do forward minus backward, sorry, forward force equals to backward force. One of the forces is going to be tension. Tension always points away from the mass, so it's pointing upwards. Weight is always pointing towards the gravitational pull, so that's downwards. S1 is actually carrying two weights, A as well as B. So that's why the downward force is 4 Newton and not just 2 Newton. All right. Now let's take a look at string S2. How many weights is S2 carrying? Here's S2. It's only carrying one weight, which is going to be the weight of particle B. So downward force is just 2 Newton, not 4 Newton this time. And upward force is going to be the same tension. So this time tension minus 2 newtons is equals to ma. A is 0. So tension is equals to 2 newtons. This is the working for part 1. Tension is simply equals to the weight that the string is carrying. Because acceleration is 0, forward force will be equals to backward force. So tension is equals to the weight that the string is carrying. S1 is actually carrying double weights because both the weights are below S1. So the downward force is going to be 4 newtons. So tension in S1 is going to be 4 newton as well. String S2 is only carrying one weight, which is the weight of B. So tension in string S2 is going to be 2 newtons. कोई सवाल है तो प्लीज पूछो. अजहर और दाऊद साथ साथ कर रहे हो? Yes, ma'am. Part 2. Find the accelerator. अच्छा, अब क्या कहा है? String S1 is cut and the particles fall. Okay, so now it's going to be like this. S1 is cut, so you have a weight, a string, and another weight. So particle A, particle B, and string S2 only. Okay. A resistance acting on A is 0.4 newtons. Which direction should I point the resistance in? Is it going to point upward? Is it going to point downwards? The object is falling. What is the direction of motion of this falling object? That someone has to answer.
मैम इसकी भी 0 होगी एक्सेलरेशन। सॉरी, क्या कह रहे हो? हम क्वेश्चन दोबारा पूछ सकते हैं? दाऊद, मुझे समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हो। क्वेश्चन दोबारा पूछूं? जी। बेटा, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है द स्ट्रिंग S1 इज कट and the particles fall. The A resistance acting on A is 0.4 newtons. तो अब मैं पूछ रही हूँ कि जो A resistance on A है which is 0.4 newtons, जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है डेटा में, इसको मैं कहाँ पे बनाऊं फिगर में? एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना हम फोर्सेस। तो ये एरो क्या A के अपवर्ड होगी कि डाउनवर्ड होगी? इट्स A resistance. बस अपवर्ड्स होगी। हाँ, क्यों होगी अपवर्ड? मिस क्योंकि रेजिस्टेंस है तो रेजिस्ट करेगा कि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को हाँ, जिसमें बिल्कुल सही. Object is going downwards. You show the direction by double arrows. So the object is going downwards. That means the resistance is going to be against the direction of motion. So this is 0.4 newtons acting upwards at A. And the A resistance acting on B is 0.2 newtons. So at B, you also make an upward arrow, 0.2 newtons. Okay. Find the expression of the particle and the tension in string S2. Okay. Now, what is the force acting here at B? What force is acting downwards at B? मैम Hmm. 10 न्यूटन नहीं, 0.6 न्यूटन होगा। खाली B पे ना, B का अपना वेट होगा ना। जी। B खाली अपना वेट डाउनवर्ड्स होगा, B का अपना वेट डाउनवर्ड्स होगा, A का तो नहीं होगा. So it's going to be, what was the mass of B? It was 0.2. So the weight is going to be 2 newtons. ठीक है. अच्छा जी, what about A? अच्छा नहीं, still at B, there's another force acting upward. What force is this? एक तो resistance is acting upwards. Which other force is acting upwards at B? टेंशन। हाँ, tension. There's a force of tension over here as well, acting at B. So let's form the equation at B. Forward force minus backward force equals MA. What's the forward force? Will it be 2.2। 2.2? Acha, dekho, the object is going downwards. So then the forward force should be just 2 newtons. The weight 2 minus what's going to be the backward force? मिस 2.4। No, why is it 2.4? Tension is not 2 now. मिस तो Tension. टेंशन और वो Tension is not the same as the tension in part 1. ठीक है, part 1 में तो acceleration was 0. Now, since the object is falling, acceleration is not 0 anymore. So, you don't know what T is. So, the backward force is T plus 0.2. Okay, equals mass times acceleration. What's the mass for object B? 0.2. And acceleration we don't know yet. We have to find that out. So it's going to be
T, in fact, it's going to be 1.8 minus T is equals to 0.2A. We're going to call this equation 1. So by applying the Newton's third law on particle B, we formed this equation, sorry. 1.8 minus tension is equals to 0.2 times acceleration. Okay. Let's do the same for object A now. Okay. Azhar, can you tell me what forces are acting on A? मैम 0.4 न्यूटन Upward है, और ठीक है, वो तो रेजिस्टेंस है। और मैम डाउनवर्ड फोर्सेस की हमें नहीं पता या नहीं डाउनवर्ड फोर्स 2 न्यूटन होगी हाँ प्लस ठीक है, 0.4 उसका अपना वेट, एक तो उसका वेट 2 न्यूटन्स प्लस 0.2, 0.2 यस तो बी की रेजिस्टेंस थी ना मैम वो। लेकिन हम्म वो ऊपर उसकी रेजिस्टेंस है लेकिन उसको ऐड नहीं कर लेंगे ए की नहीं नहीं हम नहीं, बी की रेजिस्टेंस खाली बी के अपवर्ड डायरेक्शन में, ए पे नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है, ए पे कोई और फोर्स है जो अभी मिस हुई हुई है। कौन सी फोर्स मिस हुई है? एक तो 0.4 न्यूटन अपवर्ड रेजिस्टेंस की फोर्स, एक वेट की फोर्स डाउनवर्ड्स 2 न्यूटन, और क्या है, एक और चीज है। हमने एक बी की फोर नहीं, बी की कोई फोर्स नहीं ए पे अप्लाई हो रही। और क्या हो गया? मैम 4 जो हमने पहले पार्ट निकाला है नहीं S1 नहीं, देखो टेंशन चेंज हो गई है। पहले पार्ट में सिस्टम एट रेस्ट था, एक्सेलरेशन 0 थी। अब सिस्टम इज फॉलिंग, एक्सेलरेशन 0 नहीं है, टेंशन डिफरेंट होगी। तो डाउनवर्ड में आपने टी लिखना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। सो डाउनवर्ड देयर इज अनदर फोर्स व्हिच इज टेंशन। ठीक है, क्योंकि उसके ओके डाउन, उसके नीचे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन जरूर होगी अगर वो स्ट्रेच स्ट्रिंग है, और टेंशन हमेशा पॉइंट्स अवे फ्रॉम द मास। सो ए के रेफरेंस से टेंशन नीचे की तरफ जा रही है क्योंकि पॉइंट्स अवे ओके फ्रॉम मास। अब इक्वेशन बनवाओ, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए की। फॉरवर्ड फोर्स हम 2 न्यूटन रख लेंगे और एक और भी है ठीक फॉरवर्ड फोर्स, दो फॉरवर्ड है फोर्स। और 2 2 और टी को हम ले लेंगे हाँ तो फॉरवर्ड टी में प्लस टू हो गई, ठीक है। टी प्लस 2 और और बैकवर्ड्स में हम 0.4 लेंगे ठीक है, और एम और ए। 0. ए की बात हो रही है ना, ए का मैथ। 0.2 हम्म 2 न्यूटन नहीं नहीं, वो तो वेट है बेटे, हमें मैथ चाहिए। अच्छा मैथ 0.2 0 पॉइंट, और एक्सेलरेशन इज ए। इससे सेकंड इक्वेशन आ रही है टी प्लस 1.6 इज इक्वल्स टू 0.2 ए। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इनको ना साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आप ए फाइंड करो। टी की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में पूछा नहीं है, देव जस्ट आस्क, अच्छा नहीं, ए टी भी पूछा है। फाइंड द एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। So please solve these two equations simultaneously and मैम आपकी वॉइस लग अच्छा अब आ रही है? हेलो, अभी भी लैग हो रही है? हेलो, नहीं आ रही आवाज, तीनों को नहीं आ रही आवाज मेरी? ये सब आ रही है। मैम कट कट के आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा, मैं फिर राउटर चेंज करके देखती हूँ।
वेट, अच्छा, कोई बेहतर हुई आवाज? हेलो, यस आवाज मैम मेरी? आप सही। अच्छा, आपने ना इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके एक्सेलरेशन और टी फाइंड करना है, टेंशन। साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, एलिमिनेशन मेथड यूज करो या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो, और मुझे वैल्यूज बताओ। क्या आती है एक्सेलरेशन और टेंशन? आवाज आ रही है मेरी? मैम मेरा ए 8.5 आ रहा है और ए टी आएगा वन। 8.5, ए शुड बी 8.5, नॉट टी। जी मैम, ए हाँ कह रहा हूँ ठीक। और टी जो है 1.63 आ रहा है। टी ये नहीं लिखा हुआ मेरे पास, एक्सेलरेशन सही है ये, टी मेरे पास कुछ और लिखा हुआ है, जरा दोबारा चेक करना। । 0.1। हाँ जी, 0.1। टेंशन का यूनिट होता है न्यूटन, क्योंकि एक फोर्स है। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। बाकी दोनों के आंसर आ गए तो बताना, नहीं आ रहे तब भी बताना, मैं सॉल्व करके देती यस मैम आ गई। हूँ। ठीक है, आयशा आ गया। जी हाँ सारी। अच्छा, अब ना ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक और तरीका भी होता है। वो ये होता है कि ये है ना हमारा सिस्टम, कि एक ए है ऑब्जेक्ट, साथ नीचे स्ट्रिंग है, और यहाँ ऑब्जेक्ट बी है। क्या करेंगे हम कि इसको कहेंगे कि ये एक ही पार्टिकल है। लेट्स से ये एक ही पार्टिकल है, ये सब मिला के इसको हम कह देंगे सिस्टम। ठीक है, ये एक ही ऑब्जेक्ट है। अब ये लिख लें, कंसिडर्ड एज सिंगल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें टोटल डाउनवर्ड वेट कितना है, टोटल इस सिस्टम का? दोनों पार्टिकल्स को मिला के डाउनवर्ड वेट कितना?
um, अच्छा, ए का क्या था डाउनवर्ड वेट और बी का क्या था, उन दोनों को ऐड कर दो, वो टोटल इस सिस्टम का डाउनवर्ड वेट हो जाएगा। अच्छा, ए का क्या था डाउनवर्ड वेट? 1.8 ये था 2 न्यूटन डाउनवर्ड ये वेट, वाला और बी का डाउनवर्ड वेट भी 2 न्यूटन था। तो अगर हम इस पूरे को एक ही ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं तो डाउनवर्ड वेट क्या होगा? 4 न्यूटन। हाँ जी, ये हो गया 4 न्यूटन। ठीक है, ये हो गया टोटल वेट। इसी तरह अपवर्ड क्या होगा? टोटल रेजिस्टेंस। तो वो मिला के 0.2 प्लस 0.4। हाँ, तो वो हो गई 0.6 न्यूटन। वो हो गई टोटल रेजिस्टेंस। अच्छा जी, अब क्योंकि टेंशन तो उस इस सिस्टम का पार्ट ही नहीं है, क्योंकि ये तो एक ही ऑब्जेक्ट है, तो अब हमने यहाँ टेंशन नहीं यूज करी। अब क्या फॉर्मूला होगा? फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल्स टू एम ए का एफ फॉरवर्ड माइनस एफ बैकवर्ड्स इक्वल्स एम ए। क्या है एफ फॉरवर्ड इस सिस्टम? 4 न्यूटन। हाँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है ना। सो 4 न्यूटन माइनस बैकवर्ड वुड बी 0.6 न्यूटन इज इक्वल्स टू व्हाट्स द मास ऑफ दिस सिस्टम? 0.4 होगा दोनों का कंबाइन करके। एग्जैक्टली, 0.4 combined mass times acceleration. Find acceleration from here, you should get the same acceleration. आती है 8.5। ठीक है, तो 8.5 न्यूटन्स, sorry, 8.5 meters per second square. Okay, now once you have A, now you need to apply the F forward minus F backward is equals to MA formula on either particle A or particle B to find tension. Now apply F delta, मैं कह रही हूँ, change in force equals MA on either A or B. For example, if we're using A, then forward force on A was 2 Newton minus backward force on A was 0.4 newtons equals to, acha, there was also a forward force of T. So 2 newtons plus tension minus backward force 0.4 equals mass, which is 0.2 into acceleration, which is 8.5. Now find T, you'll again get 0.1 Newton. So you will still have to use one of the two simultaneous equations, but you can find acceleration in a much quicker way if you consider the entire system, because then you don't have to take into account the tensions when you're considering the entire system. And later, once you have the acceleration, then now again you'll have to apply the formula of forward force minus backward force is equals to MA on either only part on particle A or only on particle B. ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछो। Yeah. I'm taking this as a no. So I'm copying the next question, which is going to be question 6. So after question number 1, we're doing question number 6 because they're pretty identical.
Then we do the remaining questions. Okay. So similar question. Okay. A block A of mass 3 kgs is attached to one end of a light inextensible string S1. Okay. So what force can I enter in the figure from this line? Three kg. Hmm. 3 kg downward. ठीक है, पर kg तो नहीं डाउनवर्ड होता ना, वेट होता है डाउन. What's going to 3 into 10. हाँ, So 30 30 Newton. Newton, yes. So there's a 30 Newton force acting downwards at A. Okay. Another block B of mass 2 kg is attached to the other end of S1. So what? 20 Newton Downwards, block B पे. हाँ, 20 Newtons. दाऊद समझ आ रही है ये बात? हाँ. The other end of S2 is attached to a fixed point O and the blocks hang in equilibrium. इससे क्या पता चल रहा है? mass acceleration equals to 0. बिल्कुल, क्योंकि मूवमेंट हो ही नहीं रही तो दैट मीन्स एक्सेलरेशन जीरो है. इक्विलिब्रियम का मतलब होता है फोर्सेस बैलेंस्ड है, मतलब कि फॉरवर्ड फोर्स और इक्वल्स टू बैकवर्ड फोर्स. It's the system does not move in equilibrium. Or even if it does move, it just means that forward forces balance out the backward forces. Okay, find the tension in S1 and the tension in S2. Resistance नहीं बताई हुई कोई? अच्छा, इसमें resistance नहीं है. अच्छा, फर्स्ट पार्ट में तो वैसी रेजिस्टेंस नहीं है. ओके, सो अभी द सिस्टम इज एट रेस्ट, दैट मींस एक्सेलरेशन इज जीरो. हमें दोनों स्ट्रिंग्स की टेंशन बतानी है. अब पहले हम ऊपर वाले स्ट्रिंग को देखते हैं, S2 को देखते हैं. इसकी टेंशन किस डायरेक्शन में बनाओ? मैम upwards. अपवर्ड्स. ठीक है, तो जो फर्स्ट स्ट्रिंग है, अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं तो अलग अलग टेंशन होगी. सेम स्ट्रिंग है तो सेम टेंशन होती है. दीज आर टू डिफरेंट स्ट्रिंग. अच्छा जी, तो ये टेंशन है, अपवर्ड है. और जो स्ट्रिंग S2 है ना, उसने एक्चुअली दो वेट्स उठाए हैं. एक B का भी उठाया हुआ है और नीचे एक A का भी उठाया. सो फिर ये टेंशन किसके इक्वल होनी चाहिए? मैम equilibrium T should be equals to B से नीचे और A से ऊपर. नहीं. फॉरवर्ड फोर्स जो है ना, वो है, सॉरी, एक अपवर्ड फोर्स T है और डाउनवर्ड फोर्सेस 2 है. इस स्ट्रिंग ने दो वजन उठाए, ऊपर वाले स्ट्रिंग ने, एक B का और एक A का. तो जो सिस्टम, सॉरी, B है पार्टिकल, वो कनेक्टेड है स्ट्रिंग S2 से, लेकिन साथ ही दूसरा पार्टिकल भी कनेक्टेड है. S2 ने दोनों के वेट्स उठाए हैं. सो टोटल डाउनवर्ड हो गया 50 न्यूटन्स और अपवर्ड तो हो गया टेंशन इन स्ट्रिंग S2. सो टेंशन इन स्ट्रिंग S2 इज 50 न्यूटन्स, क्योंकि एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो MA जीरो हो गया. तो फॉरवर्ड फोर्स हो गई बैकवर्ड फोर्स की. स्ट्रिंग S2, सॉरी S1 एक अलग से स्ट्रिंग है, उसकी अपनी टेंशन होगी. वो क्या होगी? मैम S2. सॉरी, S1 की, नीचे वाले स्ट्रिंग की. What should be the मैम A से upward.
हाँ ठीक है, ये टेंशन है। और क्या होगी ये टेंशन, किसके इक्वल होगी? S1 ने खाली एक वेट उठाया। 30 न्यूटन्स। हाँ जी, 30 न्यूटन। So this tension of S1 is equals to 30 Newton. जो S2 है, ऊपर वाला स्ट्रिंग है, उसने एक्चुअली दो वेट्स उठाए हैं, इसलिए जो वेट होगा वो 50 न्यूटन होगा, तो टेंशन भी 50 न्यूटन। और सेकंड केस में 30 न्यूटन है। अच्छा जी, अब पार्ट 2 में क्वेश्चन चेंज हो गया। वो कह रहे हैं कि स्ट्रिंग S2 को ब्रेक कर दिया है और ये स्ट्रिंग S1 नीचे गिर रहा है, तो अब टेंशन चेंज हो गई है। इट्स नॉट द सेम टेंशन एज बिफोर। ठीक है, तो अब हम इसी तरह या तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनाएंगे ए और बी पे, और टी और ए निकाल लेंगे, और या फिर हम पूरा सिस्टम कंसिडर करेंगे, पहले इसको एक ही पार्टिकल कंसिडर करेंगे, टेंशन नहीं लेते उसमें, और एक्सेलरेशन निकाल के फिर बी या फिर ए पे फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल्स टू एम ए करके टेंशन भी निकाल लेंगे। आई एम सेंडिंग यू गाइस अ न्यू लिंक, विल कंटिन्यू। In part 2, the string S1 is broken and this system starts falling down. So that means now there's acceleration. Okay, this is A, this is B. Let's look at B first. The A resistance on A is 1.6 newtons and on B is 4 newtons. A resistance is pointing away from the direction of motion. So here upward it's 4 newton, and here's upward it's going to be 1.6 newtons. Okay. Then at B, there's a weight pointing downwards. Weight is 20 newtons. We already know from part 1 that weight on B is 20 newtons. Similarly, there's a weight on A, which is 30 newtons. So there's a downward arrow that you make at A, representing 30 newton of downward weight. Okay. Then, since there's a string here, that means there's tension here. So from reference of B, the tension would be pointing downwards. And from reference of A, there's a tension pointing upwards, because tension is always pointing away from the mass. So at B, the tension is downwards. At A, the tension is upwards. And since it's just one string, it's a single string, the same string S1, I'm calling them both T's and not T1 and T2. In part 1, the strings were different. So at B, there was a tension upwards for string 2, and at A, there was a string, there was also a tension upwards, which was that of S1. Now let's form the equations. At B, I'm going to apply forward force minus backward force equals MA. So there's going to be forward force is going to be 20 plus T. It's the downward force. Minus backward force is 4 newtons equals to mass at B, which is 0.2 kgs, sorry, 2 kgs, exactly 2 kgs, times acceleration. So this would be 16 plus T equals to A, calling this equation number 1.
Similarly, at A, we have a downward force of 30 newtons, so forward force is 30, minus we have two backward forces, T plus 1.6 equals MA. Mass of A is 3 kgs and acceleration is what we have to find. So this would be 31.6 minus T is equals to 3A. Please solve these two equations simultaneously and tell me what we get for A and for T. Oops, I made a mistake. This is being subtracted, not added. So fix this. This should be 28.4. Mystic solution 8.88 IU. ठीक है minus 1.76 -1.76 प्लस होगा negative नहीं दोनों साइड पे माइनस माइनस होगा शायद वो कट हो रहा हो देखो it should be plus 1.76 minus t is equals to -1.76 आ रहा होगा so t equals 1.76 आयशा नेगेटिव आ रहा है कि नहीं पॉजिटिव ही आएगा। हाँ पॉजिटिव है तो दाऊद आपका मोस्ट E- प्रोबेबली माइनस टी इक्वल्स -1.76 जो कट के पॉजिटिव हो रहा होगा मैम एक में -1.76 आ रहा है और दूसरे में पॉजिटिव आ रहा नहीं किसमें नेगेटिव आ रहा है है ऊपर वाले में जो 116 प्लस टी इक्वल टू 2a तो देखते हैं 16 प्लस टी इक्वल्स 2 टाइम्स 8.88 ये कैसे नेगेटिव आ रहा है नहीं आएगा नेगेटिव 2 इंटू 8.88 तो 16 से बड़ी वैल्यू है 7.76 आ रहा है सॉरी क्या कह रहे हो नहीं आएगा ये नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय 8.88 जो 17.76 आ रहा था तो मैंने हाँ उससे 16 माइनस ताकि पॉजिटिव में रहे हाँ तो ये तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहेगा ना पॉजिटिव है दोनों पॉजिटिव है ना है ठीक है दोनों पॉजिटिव ठीक है चलो अच्छा मैकेनिक्स का बस इतना ही है आज के लिए अब प्योर शुरू करते हैं प्योर का पेपर डिस्कस कर लेते हैं 3-4 सवाल दिए